you could reach it, you could reach a more milestone at any point of your life. Yeah, for sure. Yeah, that's really nice. Okay, so Roop, getting back to the questions, you're constantly approached by brands. We've seen you doing, a lot of ads, a lot of collaborations with different brands. What's an immediate red flag that makes you turn down a collaboration? The disrespect. Can you explain more? Like for example, a brand reaches out to you and they're like कि नहीं, like for example budget की बात हो रही है and I'm giving them a quotation कि यार इतना मैं charge करती हूँ and they're like नहीं हानिया भी तो इतना चार्ज करती है या वो तो इतना चार्ज कंपैरिजन बहुत करना शुरू करते करने लग जाते हैं और फिर मतलब आई डोंट लाइक, आई रिस्पेक्ट उनको भी जो दूसरे क्रिएटर्स हैं, पर लाइक यू शुड नॉट कंपेयर. अगेन वही बात है कि यार कंपैरिजन नहीं होना चाहिए और ब्रांड्स इस तरह से करके अगले बंदे को, उस कंटेंट क्रिएटर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं. तो आई फील लाइक दिस इज सो बैड. दिस इज समथिंग न्यू आई हैव हर्ड कि ब्रांड्स भी एक कंपैरिजन करते हैं कंटेंट क्रिएटर्स के बीच में. Okay. Being married to another creator means your work and personal life naturally overlaps. How do you make sure relationship doesn't start feeling like content? Acha, so when we used to make vlogs back in 2024, I believe तब ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील करती थी मैं, because we used to make daily vlogs. और उसके अंदर पर्सनल लाइफ आपकी टोटली निगलेक्ट हो जाती है. Everything, all the activities you're doing, even if you're going on a honeymoon, तो you're more focused on the vlogs कि यार हम लोग content निकाल लें उसमें से, या what is the best we can do to for the people, not for ourselves but for the people. So obviously वो चीज़ मुझे बहुत फील होती थी, but eventually जब डॉलर्स आते थे अकाउंट में तो फिर मैं खुश हो जाती थी कि चलो यार दैट्स It was worth it. Yeah, it was worth it. But have you guys overcome it yet now? कि कुछ ऐसा पार्ट होता है कि you're like नहीं आज नहीं बनाना कंटेंट, आज हमारा मी टाइम है. कि भाई कर रहे हैं आप ऐसे कि नहीं? नहीं, एक्चुअली ही इज़ वेरी नाइस इन इस मामले में. अब तो वैसे आपको पता है कि वी आर नॉट मेकिंग व्लॉग्स, लाइक ही इज़ नॉट मेकिंग व्लॉग्स, आई डोंट डू व्लॉग्स एनीवे. मेरा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम इज़ नॉट लाइक दैट. इंस्टाग्राम इज़ लाइक अभी 1 घंटे का इंटरव्यू हुआ, इसके बाद आई एम बैक टू माई नॉर्मल लाइफ. आई कैन स्पेंड टाइम विद माई हस्बैंड, आई कैन गो आउट, आई कैन मीट हुएवर आई वांट. तो उसमें फिर वो प्रॉब्लम नहीं होती. बट हाँ, डेफिनेटली जब आप लाइक फॉर एग्जाम्पल व्लॉग्स कर रहे होते हो तो फिर आपका पूरा दिन बाउंड हो जाता है. आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो फिर आप हनीमून पे हो या जो भी हो, आप बाहर गए हो, यू आर शोइंग एवरी लाइक पार्ट ऑफ योर डे कि यार हमने ये खाया, ये किया, वो किया. तो अपना वाला टाइम वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होता था, बट इट डजंट हैपन एनीमोर. दैट्स ग्रेट टू नो. Okay, you and Saad have such different personalities on camera. What do you think is the biggest misconception people have about your relationship? Oh. You tell me, what is my personality on the camera? I feel you're an introvert and he's a kind of an extrovert. But मुझे लगता है ये उल्टा है. ये उल्टा है. You said it. Because he's actually an introvert. Yeah. And I'm not extrovert, but I'm very, कैसे कह सकती हूँ मैं इसको? How to explain it? कि जैसे you know your people. कि किनके साथ जेलन करना और किनके साथ नहीं करना. Yeah, exactly. I do open up, but only with very selective people. Yeah. And Saad is the one who's like content पे लगेगा कि सबसे बात कर लेंगे, but जैसे कैमरा ऑफ होगा he's like okay मैं कोने में बैठ जाऊँ. Yeah, right. Okay, nice. Okay, so we're going to do a rapid fire with you. You have to select कि कौन सी आपको ऑप्शन पसंद है और कौन सी नहीं. Okay, so Instagram Reels or YouTube videos? Definitely Instagram Reels. Heels or sneakers? Heels. Okay, coffee or chai? Coffee. Gold jewelry or silver? Gold. Designer wear or high street fashion? Designer wear. Glam makeup or no makeup? No makeup. Okay. Online shopping or in store? I think online, because I cannot go out उस तरह से. Okay. So we as an audience have seen that you have pets. So the next question is related to that. Okay. Poosh or Ducky bhai? Saad, of course. Not Poosh? Yeah, Poosh भी यार. This is a pet. अभी तो आपने एक नई कैट भी ली है. Yeah, Mishi. मिशी. या तो अब चलो पूश और मिशी.
Oh my god. I love you, Mishi, but Poosh. Guys, Poosh is the cutest cat I've ever seen. एक Yeah. like you know Garfield in a human form है वो अभी मिल नहीं रहा पता वो नहीं किधर पीछे गया आपके है बिल्कुल अंदर गया हुआ सोफे के. उसको निकालते हैं. Okay, so guys, we have a special guest joining us in the interview. The one and only, the cutest cat I've ever seen, Poosh. Can you tell us the story behind Poosh? Like, you know, आपने कब लिया and like, you know, what's the journey been like being a cat mom? Cat mom. We found him on the street. Oh. हम लोग कहीं जा रहे थे और ये रास्ते में हमें मिला. Now he's the important part of my life. It seems he's very cute, He's very mashallah. cute. He's so calm. Okay, coming back to the questions, that was the rapid fire round. We're coming towards the end of the video. Okay, Aroop, what's something people assume about you that's completely inaccurate? What people... Like क्या assumption है लोगों की कि like you know कैमरे पे आप कुछ I लगती get हैं the but off question. camera you're something else. Yeah, you're the audience. You tell. Huh, where the yeah guys please comments में Yeah, you बताएं. tell. What are the assumptions about me? I think people think that I'm pregnant when Oh my god. That got way too real. Okay guys, now you guys know the answer. She's only a cat mom, not an actual mom. और ये जो Poosh, उनका बच्चा, दो बच्चे. दो बच्चे, Mishi भी. Mishi and Poosh. Okay. Describe Aroop Jatoi in 3 words. She is generous. And 3 words. Oh, okay. 3 sentences. Yeah, 3 Okay. sentences चलें. She is generous. She is loyal. She is very loving. No, that's so sweet. My question to you is, कि like you know, people think content creation is a very easy job and an easy way to make money. Okay, what's your take on that? काम कोई भी आसान नहीं है. काम चाहे आप जो कर रही हो वो भी आसान नहीं है. काम जो मैं कर रही हूँ वो भी आसान नहीं है. Because आप देखो, we compromise on so many things. We sacrifice so many things. हमारी personal life हो गई. उसके बाद there's so many things that I cannot do because I come on like social media, right? So there are so many sacrifices that we do and you don't see. So you cannot say that. Yeah, that's a really great advice, Aroop. And also one more question. You recently got viral for making Instagram vlogs, जो home vlogs आप Oh, बनाती yeah, हैं. home series. So do you consider yourself as a trendsetter? Because after your videos, we saw many influencers making those kind of videos. Yeah. We both actually are the trendsetters. Oh, nice. I believe. So yeah, okay. Okay guys, so that was